Today, we are gathered here not just to unveil our legacy name, Mirage FS5, but to embark on a journey that unveils the remarkable story of Formula Ashwariders. Before we proceed with the ceremony, let us seek the blessings of the divine and embark on this journey of enlightenment. I request respected Father Dr. Paul Chandra Kunel, Principal Surendra Gole sir, Professor Nagpur sir, Dr. Khan sir, and Team Captain Om Roy to kindly do the honors of lighting the lamp. I request Anmol sir to please come here for lighting the lamp. And if one parent can also do the honor of lighting the lamp. दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो में हरातु पापम संध्या दीपा नमोस्तुते. The meaning of this mantra is I fold my hands before the Lord, the maintainer of this creation, in form of this light. I adore this light which destroys all the pains resulting from my omissions and commissions. Formula Ashwariders. The gravity of this word itself brings a sense of pride, responsibility, and unyielding spirit of dedication. In the halls of learning, where textbooks usually rule, a bunch of people got together in 2015 with a big dream. Instead of just tackling textbooks, we wanted more. We envisioned a journey beyond the usual academic grind, not just about racing, but about throwing our ideas into the mix, solving problems in a creative way, and daring to break free the academic norm. Back then, we were in the Formula student team you see now. We kicked off the world of go-karting, back with the national champion title in 2018 and 2 years. But champions driven by an unyielding spirit are always eager to embrace fresh challenges and aspirations. So, in 2020, we shifted gears from go-karting to Formula-style vehicles. In 2020, when the pandemic disrupted our plans of on-site events, Formula Ashwa Riders didn't let us down. Instead, we adapted by moving on to the virtuals. Despite the challenges of the pandemic, we put in hard work and needed to manufacture our vehicle and participated in the static events. It wasn't easy, but our team stayed focused and resilient. We tackled the obstacles head on, never allowing the pandemic to lose our motivation. Working together, we managed to overcome the difficulties and successfully built our vehicle. This experience showed us that with determination and teamwork, we could do anything. In Formula Bharat 2021 virtuals, not only did we act, but we excelled, securing an All India rank 21. The next year, in the virtuals again, we bagged an impressive All India rank 7 along with 3 in business plan presentation. In the past year, we ventured on-site for the second time and secured All India rank 14 with 10th in engineering design presentation.
Fast forward to 2024, a year where our legacy doesn't just endure but thrives. Our collective efforts, from overcoming challenges to celebrating success, have led to an impressive rank of All India Rank 8. Excelling in engineering design finance, we have secured an All India Rank 6th in it. We have secured an All India Rank 8 in concept resource management and 10 in business plan presentation as well. We were able to clear 3 out of 4 technical inspections, including the mechanical TI, tilt test, and noise test. It is not just about the numbers, it's about the journey, the challenges, and the victories that define us. As we unveil Mirage FS 5 today, it's more than just a vehicle. It's a living example of a team that hustled throughout the years. It's not, it's not only a succeeding expectation, but also pushed its own limits. Formula Ashwariders' legacy isn't just in victories, but in stories of a team that embraced challenges, adapted, and soared to new heights. Today, we invite you to witness not just a race car, but a story still unfolding, with each achievement propelling us further towards a future where success knows no bound. I would like to call Atharva Nimze and Sanvi Vaidya to brief us all of the team further. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अथर्व और मेरी कलीग सानवी, हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आपका बच्चा वर्कशॉप में करता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द कंपटीशन। तो फॉर्मूला भारत हर साल कोयम्बतूर में ऑर्गेनाइज होता है। इट्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक इवेंट्स और डायनामिक इवेंट्स। स्टैटिक इवेंट्स साल भर चलता है। देयर आर वेरियस प्रेजेंटेशन, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग डिजाइन प्रेजेंटेशन, उसमें गाड़ी का पूरा डिजाइन जजेस को वैलिडेट करके एक्सप्लेन करना पड़ता है। देन सेकंड कम्स कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इवेंट, उसमें गाड़ी में कितना पैसा गया, वो कहाँ कहाँ लगा, वो सब जजेस को एक्सप्लेन करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। थर्ड कम्स बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन। अगर कोई पेरेंट्स शार्क टैंक से फैमिलियर होंगे तो इट्स अ सिमिलर इवेंट जिसमें व्हीकल के अराउंड एक बिजनेस प्लान पेच करना पड़ता है जजेस को, और जजेस उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, व्हाट नॉट। नेक्स्ट कम्स द डायनामिक इवेंट्स। सो पूरी व्हीकल रेडी होने के बाद जो डायनामिक इवेंट्स है उसके लिए व्हीकल लेके जानी पड़ती है कोयम्बतूर, उसमें गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। सो ये परफॉर्मेंस टेस्ट होने के पहले व्हीकल का टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है। सो टेक्निकल इंस्पेक्शन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मैकेनिकल इंस्पेक्शन, जिसमें व्हीकल के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और व्हीकल के कंपोनेंट्स रूल बुक के हिसाब से सही बने हैं या नहीं, ये चेक होता है। नेक्स्ट कम्स द टिल्ट टेस्ट। टिल्ट टेस्ट होता है कि व्हीकल प्लैंक पर खड़ी करता है, उस प्लैंक को टिल्ट करते हैं एट अ सर्टेन एंगल, और व्हीकल के फ्लूइड लीक्स और स्टेबिलिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट कम्स द नॉइज टेस्ट। नॉइज टेस्ट में होता है ऐसा है कि एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो एक सर्टेन लिमिट तक है या नहीं, ये चेक करते हैं। अगर वो उससे एक्सीड होता है तो वो टेस्ट क्लियर नहीं होता। इसके साथ साथ नॉइज टेस्ट में ब्रेक सिस्टम में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं, वो चेक होता है, और शटडाउन सिस्टम चेक होता है। नेक्स्ट जो फाइनली जो ब्रेक टेस्ट होता है, ब्रेक टेस्ट में व्हीकल को एक सर्टेन स्पीड पे रन करा के ब्रेक्स चेक करते हैं कि व्हीकल के चालक के लॉक हो रहे हैं या नहीं। बाद ही इसमें वो रहता है तीन तरह के स्किड पार्ट एंड एंडोरेंस। हर एक इवेंट में अलग अलग व्हीकल के पैरामीटर्स चेक होते हैं। आगे बढ़े वर्कफ्लो पे। तो बेसिकली टीम में काम कैसा होता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो टीम का वर्कफ्लो 4 फेजेस में डिवाइडेड रहता। द फर्स्ट वन इज रिसर्च फेज, सेकेंड वन इज डिजाइन एंड एनालिसिस फेज, थर्ड रहता है मैन्युफैक्चरिंग फेज, एंड फोर्थ इज टेस्टिंग फेज। तो रिसर्च फेज से स्टार्ट करते हैं। तो रिसर्च फेज में आप कोई भी एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है प्लानिंग। तो रिसर्च फेज प्लानिंग से स्टार्ट होता है। प्रीवियस ईयर में गाड़ी में जितने भी फ्लॉज है, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, उनको हम नोट डाउन करते हैं। एंड गाड़ी में जितने भी परफॉर्मेंस चेंजेस करने फॉर द नेक्स्ट सीजन, उसके बेसिस पे कंसेप्ट डिसाइड होता है।
अभी कंसेप्ट डिसाइड होने के बाद उस पर डीप स्टडी की जाती है, उस पर रिसर्च किया जाता है, उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में, एंड उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो डिस्कस होते हैं, नए आइडियाज डिस्कस होते हैं, एंड उसके बेसिस पे डिजाइन स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर पे। सो हमारा जो नेक्स्ट फेज है दैट इज डिजाइन एंड एनालिसिस फेज। इस फेज में होता क्या है कि रिसर्च फेज में जो भी स्टडी किया है, जो भी कंसेप्ट डिसाइड किया है, ये चीज अब गाड़ी पर इम्प्लीमेंट करना है। तो हर डिपार्टमेंट अपने इंडिविजुअल लेवल पे इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो हमारे टीम में डिपार्टमेंट्स है, एक पावर ट्रेन, डिजाइन, ब्रेक्स, डाटा एक्विजिशन एंड इलेक्ट्रिकल्स एंड व्हीकल डायनामिक्स। तो ये 5 डिपार्टमेंट्स अपने इंडिविजुअल लेवल पे इन कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट स्टडी करके इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन होता है कंपोनेंट्स के डिजाइन से। अब ये कंपोनेंट्स डिजाइन होने के बाद जब व्हीकल रन होगी तो ये व्हीकल्स वो फोर्स सस्टेन करेंगे क्या, डायनामिक में वो टिकेंगे क्या, ये चीज चेक करने के लिए एनालिसिस परफॉर्म करते हैं इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर पे। ये एनालिसिस परफॉर्म होने के बाद ही कंपोनेंट्स फाइनल होते हैं और तब जाके मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाके बढ़ते हैं। इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेजेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज अगर डिजाइन गलत बना तो कंपोनेंट गलत बनेगा, व्हीकल बराबर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो एक बार कंपोनेंट सॉफ्टवेयर पे फाइनलाइज हो गए, उसके बाद एक्चुअल गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग फेज अराउंड जून स्टार्ट होता है एंड इट स्टार्ट्स विद द चैसी। तो चैसी इज बेसिकली द मेन स्केलेटन ऑफ द व्हीकल, इट्स द स्ट्रक्चर जिस पे गाड़ी के बाकी के कंपोनेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहले चैसी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके लिए मार्केट रिसर्च किया जाता है, मटेरियल प्रोक्योर किया जाता है, एंड जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, नॉचिंग, सब हम खुद सीख के डिजाइन फेज में या रिसर्च फेज में हम खुद इम्प्लीमेंट करते हैं गाड़ी पे। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज जैसे ही अलोंग विद चैसी सस्पेंशन के पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं, एंड आफ्टर दैट बॉडी वर्क्स मैन्युफैक्चर होते हैं। बॉडी वर्क्स इज वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसमें पूरी टीम पार्ट लेती है। बॉडी वर्क्स इज बॉडी वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू नोज कोन, साइड पैनल्स एंड साइड बोर्ड्स, जो भी आपको गाड़ी का बाहर का स्ट्रक्चर दिखता है, जिससे गाड़ी के looks बनते हैं, like aesthetics of the vehicle, that comes under body works. So body works होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होती है एंड उसके बाद असेंबली स्टार्ट। सो असेंबली फेज इज सारे कंपोनेंट्स बन गए, इनको गाड़ी पे असेंबल करना पड़ता है सही से। इस फेज में अबाउट 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाते हैं। इसके बाद आता है व्हीकल की टेस्टिंग। व्हीकल टेस्टिंग में मोस्टली और डेटा एक्विजिशन मेजर काम रहता है, बिकॉज काफी महीनों के बाद इंजन स्टार्ट होने वाला रहता है। तो अनसर्टेनिटी है कि इंजन स्टार्ट होगा क्या, बिकॉज काफी करेक्शंस रहते हैं, काफी सेंसर्स रहते हैं, इतने कंफ्यूजिंग और बहुत पेशेंस टेस्टिंग फेज है ये। तो अब तक हमारा ऐसा था कि जो अनसर्टेनिटी थी वो टिकी रहती थी, जाती ही नहीं थी कि इंजन रन होगा क्या, आज इंजन रन हुआ तो कल रन होगा क्या। बट इस साल वो प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हुआ है, बिकॉज इस साल हमने एक नया ईसीयू इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया था। तो ये हमारा इस साल का सेंट्रल कॉन्सेप्ट था, हमने नया ईसीयू इम्प्लीमेंट किया है गाड़ी पे। ये ईसीयू हमने इंटरनेशनली प्रोक्योर किया है, हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट था। प्रोक्योरमेंट में यूज फोर्स इन सर्कमस्टेंसेस हो गया। सो हो छोड़िए, इस साल इम्प्लीमेंट होगा अराउंड दिसंबर। वी गॉट द ईसीयू अराउंड दिसंबर वी गॉट द ईसीयू, एंड उसके बाद जनवरी में हमने उस पर फर्स्ट टाइम इंजन चालू किया, एंड देन वी डिडंट लुक बैक। हमने उसके बाद पूरा टेस्टिंग फेज नए वाले ईसीयू पे ही किया, ऑन साइट भी, एंड ऑफ सीजन टेस्टिंग भी हम उसी पे कर रहे हैं। So ECU is an electronic control unit. It So basically just like a computer has a CPU, that is what it runs on. All the decision making of the computer is done by CPU. Similarly,
all the control system, like the engine is controlled by the ECU. How much fuel should be sent into the chambers, that is all decided by the ECU. So it was a major breakthrough for our team because the stock ECU, we use a KTM RC390 and it comes with its own stock ECU, which is given by KTM. But the engine wasn't running properly on it. So we procured this new ECU, which we configured it by ourselves, all the valve timings and all the fuel intake, how much should be done. All that is controlled by the ECU and all that is configured by our in the software itself. So to further brief us on the testing and on-site experience, मैं अभिषेक क्यों थे हमारी टीम के पिछले 3 साल से ड्राइवर रह चुके हैं और सूरज भक्त थे इस साल के मैन्युफैक्चरिंग लीड, इन दोनों को बुलाना चाहूंगा स्टेज में. हेलो, सुप्रभात सभी को. एज आई एम ऑपरेशनल लीड, मेरा काम ऑपरेशंस देखना है कि जो भी चीज़ें हो रही है मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो इवेंट्स कंडक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने का काम है, एज वेल एज द HR कि लोगों को कैसे मैनेज करें बाकी चीज़ों के लिए, या छुट्टी चाहिए या घर पे जाना है, किसी चीज़ का काम है या एकेडमिक्स है, वो रिलेटेड. और ये मेरे कलीग है सूरज भक्त. मेरा नाम सूरज भक्त है. मैं मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम करता था. तो मैन्युफैक्चरिंग यानी चेसी से लेके सारी चीज़ें जहाँ तक हम गाड़ी बनाते हैं सारी चीज़ें हमने वर्कशॉप में बनाई. मेरी मम्मी का एक सवाल रहता था हमेशा कि मैं लेबर हूँ कॉलेज में या फिर काम करता हूँ, क्योंकि कपड़े मेरे कॉलेज के इतने खराब रहते थे कि वो मैं घर लेके नहीं जा सकता था, हॉस्टल में ही साफ कर लेता था. तो वो कपड़े कहाँ खराब हुए उन सब का जवाब आपको शायद PPT में दिख गया होगा कि जैसे कि कपड़े वहाँ पे दिख रहे हैं आपको पेंट, हम लोग FRP चढ़ा देते, सारे कपड़े वही वही खराब होते थे. एक प्रोसेस रहता था वो मैन्युफैक्चरिंग का, नहीं पता रहता था कि कब क्या करना है, और वो एक प्रोसेस हम चलते थे अभिषेक के साथ, ऑपरेशन लीड के साथ. एज द ऑपरेशन लीड बाकी सारी चीज़ें जैसे फैब्रिकेशन हो गया, मैन्युफैक्चर हो गई जैसे की, तो उस बीच में शायद काम तो हो गई एटलीस्ट, पर मस्ती तो नेक्स्ट लेवल. अब मस्ती कैसे होगी, एज एग्जांपल एक था TI का शायद तक के टील टेस्ट था हमारा. तो एज ड्राइवर आई कैन नॉट हियर एनीथिंग आउटसाइड द व्हीकल, मैं बाहर कुछ भी चीजें सुन नहीं सकता था. तो आई वाज जस्ट आस्किंग भाई क्या हुआ, व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट. एट दैट टाइम ये लोग पूरे पैनिक थे कि ये चीजें अटक रही है, शायद ये निकालनी चाहिए थी. तो ही जस्ट हिट मी ऑन द हेलमेट कि रुक जा 2 मिनट शांत रहे, लेट देम डू देयर थिंग्स, और फिर बाकी चीजें हो करके. एंड नाइट्स की भी कुछ फोटो है हमारी कि हम नाइट्स में कैसे काम करते हैं. शिफ्ट वाइज चलता है, आधे लोग नाइट में रहते हैं बाकी मॉर्निंग में रहते हैं. तो इस पूरे साइकिल में गाड़ी के ऊपर 24 घंटा काम होता है. तो ये हमारा इवेंट साइट का नाइट का एक फोटो है जहाँ पे डे बिफोर गाड़ी के अंदर कुछ रहते थे जो हमको रेक्टिफाई करने थे ड्यू टू एलोकेशंस की वर्कशॉप्स ना मिलना या बाकी चीजें, तो हमको वो सामान होटल लाना पड़ा था फॉर रिपेयरमेंट. वी हैव टू आस्क द होटल्स फॉर द प्लेस टू वर्क. तो रात भर 3 बजे तक के बाकी होटल के लोगों को भी परेशान करना, वो कंटिन्यूशन में मशीन चलना, नींद किसी की पूरी नहीं हुई है, तो ये सारी चीजें चलते रहे. बाकी सर नाइट मतलब ये जो फोटो है ये मतलब कैंटीन की, कॉलेज कैंटीन की, जहाँ पे हम लोग नाइट में काम करते थे. प्लान रहता था कि वहाँ पे खाना वगैरह खाना है. तो सारे नाइट में एक्चुअली में इस साल भी और पिछले साल भी काफी पकाया इन लोगों को मैंने. और साथ में ऐसा होता था कि नाइट एक ऐसी चीज रहती थी कि जहाँ पे हम 15 दिन का काम आफ्टर कॉलेज करते थे, वो एक नाइट हमें काम वहाँ पे दिला. तो काम करते थे, कुछ कुछ लोग हैं जो सो जाते थे, उनके लिए हमने फिर एक पैटर्न बनाया था बर्थडे विश करने का. तो वो भी है हमारे पास. नाइट एक ऐसी चीज थी हमारे पास जो शायद मैंने या फिर और टीम में किसी ने देखी थी पहले. हमें पता है कि हमारे मम्मी पापा करते हैं ना काम, वो एक्सपीरियंस हमें टीम ने दिया कि वहाँ पे एक्चुअली नाइट क्या होती है, हमें क्या दिलाती है. वो
जो कुछ है वो नाइट में सीखा हमने, काम कैसे होता है, नींद कैसे भगाई जाती है, या फिर प्लान कैसे बनाया जाता है। और साथ में जब टीम रहती है, जूनियर सीनियर या फिर कोई भी, तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम नाइट में काम करें कि क्या करें। एक्चुअली हम एंजॉय करते हैं उस नाइट को। सो यहाँ आता है हमारा टेस्टिंग फेज। तो जैसे ही गाड़ी हमारी ऑन वर्किंग आ जाती है, वी स्टार्टेड आवर टेस्टिंग। अब इसमें साथों साथ अभी इस टाइम का एक नया कंसेप्ट था कि हम वाइल्ड टेस्टिंग गाड़ी का टेक्निकली भी रेडी करें अकॉर्डिंग द रूल बुक्स। तो टेस्टिंग के साथ में एज आई एम ड्राइवर, आई हैव टू गाइड मोर पीपल आफ्टर मी जो ड्राइवर बनने वाले हैं। तो इट वाज एन रॉ व्हीकल, मतलब जैसे कमर्शियल व्हीकल्स आप चलाते हो तो वो एक कंट्रोलेबल एक लिमिट तक के रहता है। बट डिजाइनिंग ए प्रोटोटाइप एंड ड्राइविंग बाय अ स्टूडेंट, इट्स अ काइंड ऑफ रिस्की थिंग। तो वो चीजें कंट्रोल करना, वो चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है, शायद ब्रेक लगे ना लगे या फ्यूल टैंक लीक है, तो ये सारी चीजें सॉर्ट करने के बाद में ही हम लोग गाड़ी निकालते थे। एट दैट टाइम रात में चलाना ये तो मैंडेटरी नहीं था हमारे लिए, पर वो टाइम पे कुछ क्रूशियल कंपोनेंट हमारे कुछ फेल आउट हुए थे, तो हमको वो टेक लेना पड़ा था। मॉर्निंग टेस्टिंग और बाकी ड्राइवर्स की टेस्टिंग वो हमको देखना पड़ता था, एक्सीडेंट्स हो, और इवन आपको पता चलेगा कि एक हुआ भी था हमारा एक रिसेंट में ड्यू टू मिस कंट्रोल ऑफ व्हीकल। तो ये चीजें टॉलरेट करने के लिए हम पूरे सेफ्टी व्हीकल्स में चेक करते हैं कि ड्राइवर सूट पहना है नहीं है, सेकेंड ईयर ड्राइवर सूट रहता है, अच्छा खासा एफआई रेटेड रहता है कि अगर कुछ होता भी तो ड्राइवर को कुछ हानि ना हो। पूरे बेल्ट्स लगे रहते हैं उसको हार्नेस के, जिसकी वजह से अगर कुछ भी अगर झटका लगे तो उसे ना लगे। नेकलेस लगा रहता है कि उसके गले पे कुछ असर ना हो। हेलमेट अच्छे क्वालिटी का भी यूज करते हैं कि वो अगर गिरा भी तो उसे ना लगे। और एट अ टाइम वहां पे सारे लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स और बाकी सेफ्टी लेके खड़े रहते हैं। सेफ्टी प्रोसीजर सबको पता रहता है कि इफ इन केस गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उसके ऊपर कुछ शटडाउन बटन लगे हुए वो दबाने हैं। इन केस नहीं तो ड्राइवर को पता है कि वो गाड़ी कैसे रोकी जाए अगर शटडाउन नहीं चले। उसकी भी ये ड्राइविंग फेज में हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये कुछ टेस्टिंग के वीडियोस है हमारे जो हम लोग कॉलेज में टेस्ट करते हैं गाड़ियों पे। वो आफ्टर टेस्टिंग हमारा गाड़ी एट द एंड तक के पूरी टेस्टिंग हो चुकी थी, वी वर रेडी फॉर डिस्पैच। मॉर्निंग में सब लोग आ चुके थे। अब वो टाइम आता है जब गाड़ी के ऊपर काम नहीं रहते हुए हम वर्कशॉप में रहते हैं, तो इट फील्स लाइक कि कुछ काम बचा नहीं है। पर वहां से एक नेक्स्ट जर्नी चालू होती है। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था, पूरा मैन्युफैक्चरिंग पूरा एक सफर देखते हुए अभी तक के। यहाँ से चालू होता है इवेंट साइड। इवेंट साइड वो साइड रहती है जहाँ पे जाने के लिए हम एक साल मेहनत करते हैं। और ऐसे में हॉस्टल हेड हूँ यहाँ पे, तो एक मेरा सपना था कि यार पूरे अश्वा के अगर एक हॉस्टल में रहता तो कितना मजा आता। और वो सपना ऑन साइड पूरा करता है। एक ही होटल में एक रूम में सीनियर जूनियर साथ में रहते हैं, और दिन भर हमारी बातें ये चलती रहती है कि अपन को कल क्या करना है, कल क्या प्लान करना है। और वो भी मजाक मस्ती के साथ। वहां पे हम शुरू होते हैं पीठ के हिसाब से। वो टाइम है जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग ले जाते हैं और कुछ लोग एक चेन बना के खड़े रहते हैं
कि हमें कुछ चीजें चाहिए अगर पीठ में, तो वो सप्लाई कर सके। साथ में वहाँ पे हॉटपीट रहता है जहाँ पे हमें अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग या फिर चीजें करनी होती है, वहाँ पे एक एरिया रहता है, वहाँ पे हम काम करते हैं। कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं, जैसे कि मैं वहाँ वहाँ पे था, और अभिषेक ड्राइवर है, तो हमेशा अभिषेक गाड़ी के साथ रहता था। तो अंदर का जो एक्सपीरियंस है वो अभिषेक बता। सो एज मैकेनिकल इंस्पेक्शन मेरा तो ऐसा था कि 3 साल से देख ही रहा हूँ। दिस वॉज न्यू टाइम फॉर मी विद द न्यू व्हीकल। तो मैं जैसे ही अंदर गया मैकेनिकल इंस्पेक्शन के लिए, सो ही आस्क्ड मी टू लूज माय गला थोड़ा ढीला कीजिए, एंड ही जस्ट बैंग द हेलमेट कि कुछ अगर इंसिडेंट होता है तो इट इज प्रिपेयर्ड करके। दैट वाज न्यू फॉर मी, तो वो एक नया था। रिगार्डिंग टू दैट, ये टीम इतने सालों से चल रही है कि बाकी टीम्स भी नोइंगली हमको जानती है। दे वाज न्यूली फैसिनेटेड अबाउट द व्हीकल, इट वाज सिंपल एंड इट वाज मोर अट्रैक्टिव। ये हमारा टेस्टिंग में ये टिल्ट टेस्ट का था फर्स्ट फोटो, जहाँ पे गाड़ी को 45 डिग्री पे टिल्ट करते। दे चेक ऑल द लुब्रिकेशन कि कहीं पे कुछ लीक है नहीं है, बाकी सारी चीजें देखने के बाद में उसे और 60 डिग्री करते हैं। अब उसमें एक फैक्ट ऐसा है कि वो सिर्फ गाड़ी नहीं, ड्राइवर के साथ होता है। तो मेरे लिए कुछ नया था, क्योंकि इस साल हमने वो मैकेनिकल टीआई किया है। एंड आफ्टर दैट साउंड टेस्ट कहीं दूर 100 मीटर 150 मीटर के दूरी पे वहां से होता है। तो टीम को इंफॉर्मेशन देते देते कि हो क्या रहा है, इट वाज काइंड ऑफ मैस, क्योंकि ऑलरेडी तुम टेंशन में रहते हो कि गाड़ी पे कुछ काम बचे हैं, वो चीज हो रही है, शायद ये निकले ना निकले, कुछ चीज बची है वो निकल रही है नहीं निकल रही है, और साथ में वो लोग पूछ रहे कि व्हाट इज द न्यूज, व्हाट इज द अपडेट फॉर द व्हीकल। एंड वी वाज लाइक 5 मिनट रुक जाओ, इट विल बी अ गुड न्यूज। तो वैसे ही हम आगे बढ़े। ये कुछ ऑन साइट के फोटो है हमारी, जहाँ पे हमारी टीम तो नहीं, हमारी फोटो में, क्योंकि कुछ लोग हॉटपिट में काम करते रहते हैं और सेम टाइम पे कुछ गाड़ी पे। तो ये हमारी पूरी जर्नी थी, और एक्सपीरियंस मैं तो 1 मिनट में बता नहीं सकता, शायद मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ कि बहुत कुछ सीखे हम लोग। ये कुछ हमारी फोटो है, टीम फोटो। ये हमारे टेक्निकल इंस्पेक्शन की कुछ वीडियो है, जैसे हमें स्टिकर लगता है आज के, आप फोटो निकाल सकते हो, आप वीडियो निकाल सकते हो। तो ये गणपति बाप्पा। तो ये थी हमारी जर्नी रिगार्डिंग द इवेंट एंड रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग, और अभी तक की हमारा सफर 3 साल का फॉर फाइनल ईयर बैच, और अभी तक के हमारा डेवलपमेंट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अभिषेक सर। सो जितने भी एल्युमनाइज और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये छोटा सा एक जर्नी वीडियो है हम लोगों का, सो प्लीज सिट बैक एंड एंजॉय।
भवानी के वीरों डालो भुजा स्वाहा हो शत्रु प्रचंड मचा दो
We also have our sister team with us, E-Formula Ashwariders, and I would like to call E-Formula Ashwariders on the stage to show their team journey as well. Good afternoon, respected fathers, principals, sir, faculty members, and parents. We are Team E Formula Assurance, founded in 2020 with the mission to align our goal to make a generic future. Our skilled mentor, Professor Mr. Atul Saxena, guided us with their expertise and dedication. Our goal is to develop an electric vehicle of competing in motorsports while prioritizing environmental sustainability. We have proudly participated in the prestigious Formula Bharat competition for the pandemic once virtually and twice dynamically, showcasing not only our engineering progress but also our management skills. Our team comprises students from diverse academic background, emphasizing our belief in the dedication of students over their specialization. फॉर्मूला भारत एक ऐसी कंपटीशन है जिसमें हमारी टेक्निकल स्किल्स ही नहीं उसके साथ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का भी महत्व रखता है। इस कंपटीशन में नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स की टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं। आईआईटीज एनआईटीज जैसे बड़े कॉलेजेस की टीम्स भी शामिल होती है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू शो स्किल्स और उनके साथ साथ हमारा नॉलेज ही नहीं नेटवर्क भी बढ़ता है। This year, we introduced our question, our second legacy week, featuring an in-house battery pack with the inclusion of new component and the heightened focus on safety by our electrical team. Compared to last year, we encountered some fresh challenges. However, despite these obstacles, we successfully navigated the complexity and overcome the turn. So, let me brief you about what we do. Firstly, we design our vehicle and do its analysis, which is a very important phase of vehicle building. Next, we do its implementation, that is manufacturing, which must be done by making sure it is compliant. Then verify it is correctly or requires any changes, which then leads to a final stage, which is testing. The testing is done to make sure the vehicle is functioning properly to the driver's input. After the final touches, we are ready for the event, which takes place at Coimbatore, Tamil Nadu. It is a 6-day competition event consisting of different inspections, such as accumulator inspection, mechanical inspection, and electrical inspection in the electrical category. जैसे हर एक जर्नी में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे जर्नी में भी कुछ फेलियर्स आए थे। हमारे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसमें एक इंटरनल एरर आने की वजह से हमारे सेल्स की वैल्यू दिख नहीं रही थी, पर हमारी इलेक्ट्रिकल टीम ने उसे भी फिक्स किया और फाइनली चलने लगा। एक बार हमारा सेटबैक था कि जो हमारी मोटर में कुछ इशू आया था, जो फर्स्ट रन के 5 दिन पहले आया था और मोटर चल नहीं रही थी। हमने इसे भी टैकल किया और उसे इंटरनेशनली मंगवाया, जो कि 15 दिन में आया। और ऑन साइट जाने के 2 दिन पहले हमारा ब्रेक कैलिबर टूट गया था। उससे पूरे टीम का मोरल डाउन हो गया था, बट हमारे कैप्टन ने किसी का हौसला टूटने नहीं दिया और हमने एक रात में उसे इंदौर के एक वेंडर से मंगवाया। अब इन फेलियर्स के साथ हमने कुछ सीख भी सीखी है, जो कि हमने पूरा बैटरी पैक इन हाउस बना, मतलब कि टीम मेंबर्स ने खुद ने वर्कशॉप में बनाया, जो कि एक आसान टास्क नहीं है। और ना ही सिर्फ डेवलप किया, वो पूरा एक्यूमुलेटर इंस्पेक्शन भी क्लियर करवाया। और इस साल कंपटीशन में हमें अल्टायर की कैश स्पॉन्सरशिप अवार्ड भी मिली, जिसकी वैल्यू 50,000 रुपीज है। ये अचीवमेंट के अलावा भी हमने एक महत्वपूर्ण सीख मिली जो पूरे टीम को लाइफ लॉन्ग याद रहेगी, जो है टाइम कितनी वैल्यूबल चीज है। हमारा कंटेनर 4 मिनट के डीले के वजह से लाइव नहीं हो पाया, जबकि वो पूरा इंस्पेक्शन क्लियर था। और जजेस ने इस बार इंस्पेक्शन स्ट्रिक्ट करने के कारण इलेक्ट्रिक कैटेगरी में किसी भी टीम का पूरा इंस्पेक्शन क्लियर नहीं हुआ। Despite the numerous obstacles we faced, we were able to construct a vehicle that outperformed the model from the previous year in the team of both performance and electrical capability.
Just as our motto says, adapt, improvise, and overcome. We adapted to any difficulties we faced over the season. We improvised with the help of our resources and overcome the problem with our strong determination. The front bearer of the team were the final year members who carried out their tasks swiftly and efficiently. Let us have a look at our journey video. I'm focused. I've been watching for the old man. Listening to everything you said, it's been running through my head, locked and loaded. I got the feeling that you know, hey. Yeah, I've only just begun. I won't stop until it's done, till you broke. So welcome to the fire. Got my legacy set in motion. So welcome to the fire. Welcome to the fire. Cause the bigger they are, the harder they fall. You build your fortress. Soldier, doesn't matter in the world we stay in. Side to side.
We would like to mention our seniors who have passed out for their valuable contribution of sharing their knowledge and still supporting us. We would like to thank all the fathers, the principal sir, the faculty member, and most importantly, the parents who let their children remain after the college hour so they can fulfill their dreams on the behalf of the team. Lastly, we would like to thank our sister teams, the Ashwariders and Formula Ashwariders, for supporting us. Thank you, Team IFA. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Our respected faculty advisor, Homeshwar Nakure sir, hasn't just been a source of knowledge, but a constant pillar of support. A steady hand during uncertain times, and an inspiration when challenges seemed unconquerable. Our journey wasn't a straight line. It had its highs and lows, moments of small milestones and doubts. But Sir has showed us the way and supported us and guided us. Sir has taught the true meaning of the quote, for there is always light. If only we are brave enough to see it. If only we are brave enough to be it. I would now request Sir to come up on the stage and share his words of inspiration. Very good afternoon to one and all present here. My role as faculty advisor started in the year 15-16 when a group of students, and I would like to mention that Nilay Akre, Devesh Narole, Akshay Devtade. They were part of Baha team and they came one fine day. Sir, we would like to quit the existing team and we would like to venture into a different motorsport, that is go-kart. I said, anyhow, I had been associated with this SAE unofficially. Why you need to form a separate team? They said that we want to actually try a different kind of domain, which is a low ground clearance vehicle, a go-karting vehicle. And that was the year 15-16. I formally got into this role of faculty advisor. And I happened to meet this group of students who were highly passionate about this motorsport and to actually compete in the particular event. Only thing missing what I found was sense of maturity and directing their passion in a right way of channelizing them. So over a period, it was observed that, and it is like I would admit that many of the students are probably technically more aware about some concepts rather than us faculties because they are in the self-exploration mode. But we as a faculty advisors, or rather I would say faculty mentors, would have to be rather identify wherein there has to be guided in terms of team spirit, understanding each other, because it's just an event. You are working with 20, 30 odd different personalities. You need to understand each other, work together for a common goal. Personal conflicts, personal interests, I would say difference of opinion would be there, need to be amicably resolved because this is what you have to do in professional life. You won't get your choice of people working with you in the actual world. So this is just an event. Winning and losing is just part and parcel of the game. Even one of the worst day, you may be lucky enough to win that particular day, or even the best day you may lose it. So there are other factors deciding the winning in the competition. The best part is to compete, compete with the right spirit. And I'm very proud that every year the team has changes. Final year passes out, new team comes in, and the kind of culture that is being built in the team is sustaining. The seniors are connected, alumni are connected, and whatever we try to be as faculty, I'm saying we because we are three
teams, Ashwarider is a passion and emotion now for all the three teams. So we actually tell them that irrespective of your uh, difference of opinion or probably the position you have, leader or juniors, it has you have to present yourself as a team. And one key point we share that in a particular event you get some setbacks, some corrections. So mistake happens once. Repeating the same mistake is a crime because you know it is wrong. And I'm very proud that the team has taken it very seriously. They learn out of mistakes. Now the mistakes are repeated. Yes, there are changes in the rules. They need to be followed. And impossible is nothing kind of philosophy which we have experienced in 2 consecutive years when we won the national championship. So at this young age, they have seen a lot of philosophies in life that what is team spirit, what is teamwork, what is positive thinking, and as I said, impossible is nothing. These are philosophical things, but these young bunch of students has experienced in the past earlier teams in the age of 19, 20 years, and that is being passed on the team. That never like let you down if there are corrections. We have observed on the particular event side many teams of reputed institute giving it up when number of corrections are there, like are suggested in the technical inspection. And our team was ready for it until the last day, like first 3 days, we were fighting with it, and the like we couldn't clear the TI as the photo was shown of the hotel terrace. It was that day, like when the inspector has suggested some changes, which uh, the team thought it is beyond our control. And somehow there has to be some moral boosting. Either one or two member lit the fire, and then they again stand up. So I said, like, we are not known for this. We cannot. We have still the deadline till tomorrow 12, and it was the earlier day when 12:30 they actually dropped their shoulders. So the Ashwariders are not known for that giving up. Somehow that spark was Suraj Bhakte, who said yes, it's possible. So and everyone actually acknowledged him. They decided what has to be done in next 2 hours. It was beyond the scope in the resources on the on site. And I said, what to do? Is it possible? They said yes. Then how? So we'll take back it to hotel and we'll do it on the hotel terrace. We'll take all the requisite permission. Unfortunately, our room was on the same floor. From the window, we can see the terrace, which was on the 5th floor. Our room was on 6th floor. And they literally worked till 3:15 a.m. And we used to board our vehicle at 7 a.m. every day in the morning, 10 minutes here or there. Both the teams followed the discipline which we expected. So that is one thing what we try to put forward to our teams. Discipline, yes, it is there, that it will be changing from organization to organization, but something which should be with you is self-discipline. So they did follow this set of instructions, and after working for 3:30 a.m. in the morning, they were ready at 6:30 for going on site. And what we couldn't clear in 3 days, we cleared 3 tests in one day, which is a remarkable achievement for the entire team because that is the toughest test. So, as a faculty advisor, I have a role to play, and I thank the entire team to be having faith in me. It's not just following instruction. Following is something, it's momentary, but imbibing what we want to tell them, which will be a lifelong learning. So I would like to call the team forward with it's a bunch of around, like say, I would say a combination of 50-50%. It was a case 2020, we formed the first formula vehicle. 98% students were mechanical, only one member from other branch. Now it's 50% mechanical and 50 other branches, including IT, CS, data science, IIoT. So that is good amalgamation of interdisciplinary team. And I found it very good that the team from soft branches were explaining the key
dynamics, vehicle dynamics to IIT Madras, IIT Kharagpur students, how they built it and what are the key points to be like taken care of while building the vehicle. So I would like to call the team forward. Om Rode, a captain from ETC, Sam Wilson, mechanical, Abhishek Yonate, mechanical, Suraj Te, mechanical, Sanchit Rujani, mechanical, Gichni Padole, civil. So these are our foundation, I would say, the final years. And with this foundation, we have pillars which are based on these foundation. The third years, Sarvadna Katore, IT, Sanvi Vaid, IT, Nidish Kohane, mechanical, Mandar Gupte, mechanical, Manav Rao, mechanical,